डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन ग्रो स्ट्रॉन्ग। आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज इंटाइटल्ड एज नेचर ऑफ मोटिवेशन। एज वी नो दैट मोटिवेशन मीन्स समथिंग which energizes, boosts, prompts, either pulls or pushes an individual to act in a desired manner in order to achieve the goal। यानी कि हम अपने गोल को हासिल नहीं कर सकते हैं विदाउट द मोटिवेशन। मोटिवेशन ज़रूरी है हर कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, द मोटिवेशन फोकसेस ऑन द कॉजेज ऑफ बिहेवियर एंड टू नो द रीजंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर it depends on nature of motivation. The following points will highlight or describe the nature of motivation. Number 1, psychological. Dear students, the nature of motivation is purely psychological. It means it is related to human mind. As we know that human mind includes interests, wills, wishes, motives, desires, feelings, emotions. I mean to say you जो एक human being का behavior है it is deposited in the mind. That is why it is rightly quoted by the trait psychologists. Personality of an individual lies in the brain. No brain, no personality. यानी कि जो हमारा पूरा behavior है या एक individual का complete पर्सनैलिटी मैकअप जो है इट इज डिपॉजिटेड इन ह्यूमन माइंड।